जय श्री कृष्णा। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में सेल्फ रियलाइजेशन विद साध्वी भगवती सरस्वती जी, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हम अपने वेदों की बात करें, धर्म पुराणों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो उसमें धर्म को बहुत महत्ता दी गई है। इनफैक्ट आज के वक्त में भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारा धर्म क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है। आइए उसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी। साध्वी जी प्रणाम। जय गंगे, जय श्री कृष्णा। साध्वी जी, सबसे पहले मैं धर्म को समझना चाहूंगी। धर्म है क्या? देखिए, धर्म का इतनी डेफिनेशंस है, इतनी वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। Dharm can be seen as everything. The right path, the right way. Our मूल nature जो है, जैसे हम कहते हैं the dharm of water is to be wet. The dharm of fire is to burn. But dharm is also the right path, the right way. We talk about a grihasti dharm. Right? A sannyasi dharm. So it's the right way, the right path. But dharm is more than that also. Dharm is that which actually is the thread that runs through our life, holding everything together. Dharm is that which protects us. It's said so beautifully, dharmo rakshati rakshita. It means those who protect the Dharm, means who live according to Dharm, who uphold the Dharm. Dharm protects them. So Dharm is that which is the core of who we are. It is that which is our right path, and it is that which protects us in our lives. So Dharm can be seen almost as everything. अभी आपने बोला live accordingly to dharma, ये क्या है? देखिए, दो अलग अलग type of dharma are there. एक है जिसको हम कह सकते हैं universal dharma. Universal dharma का मतलब क्या है? जैसे पतंजलि का जो अष्टांग योग, जो 8 limbs of योग, जिसमें यम or niyam hai. You could take the yam and niyam and you could say these are the 10 commandments for a dharmic life. है ना? अभी समय इतनी नहीं है कि हम सब 5 yam 5 niyam में जाएं, but you can just look at even the beginning. Ahimsa, non-violence, satya, truthfulness, asteya, non-stealing, right? Even bas utna le lo. To live a life of non-violence, of truthfulness, of sharing, of compassion, of integrity, of honesty, of sincerity. These are what we could call universal dharma. They apply to everyone. Aap koi bhi ho. These are the rules of life. Don't be violent. Do not steal and hoard. Speak the truth. No, this is core dharma. But then we also have our individual dharma. Each of us as beings, and even at different phases of our life. So for example, when we are young, we have the dharma of being a student, of what our roles and responsibilities are in the house. Get married, you have the dharma of being a husband or wife. You have the dharma of what you're doing in the world, how you are serving the world. We have all of these alag-alag dharmas, but we also, each of us has our own unique path. Jaise mere liye, my dharma is to be a sannyasi. I found it. पहले तो मुझे मालूम नहीं था बचपन में,
but जैसे भारत में आए, जैसे गंगा जी का दर्शन किया, जैसे I had that transforming experience, उसी समय ऐसे अनुभव हुआ, oh, this is my dharma. I found it. आपका धर्म अलग है. You are not meant to be a sannyasi. We each have different dharmas. They are very important because क्या होता है family में? We have agendas that everybody should be according to our agenda. So just say imagine in our family, everybody are doctors. Father's doctor, mother's doctor, everybody's doctor, brother's doctor, sister's doctor, sabhi doctors हैं. So naturally जो expectation है of the young ones is वो भी doctor बन जाएं. But maybe one of them, his dharma is actually to be an artist instead, or to be a musician instead, or to be a sannyasi instead. But हम इतनी pressure लगाते हैं to become that doctor, or to become that engineer, or to become that businessman, that we suffocate the actual dharma of our children. And this is why it's so important that chahe parents to children, chahe husband to wife, chahe friend to friend, that when we love someone, we don't love them according to our agenda of kya banna chahiye, kaise jeena chahiye, but that we actually love them and their dharma, whatever it may be. So when I say that we have our own dharma to live, that's what I mean. Now, what happens these days is sabhi apne dharma dhoond rahe hain. Itne log रोज सत्संग में आते हैं, पूछते हैं कि how do I know what is my dharma, what is my purpose? And unfortunately, what's happened recently, ये नया trend आ गया, I think a lot of it from the West, जब लोग अपनी purpose के बारे में बात करते हैं, passion के बारे में बात करते हैं, कि just when you find your purpose, when you find this, then you will be happy and satisfied. Problem with that is, it now has this allure, कि when I find my dharma, it will be something that is very glamorous. It will be something that is very romantic. It will be something that gets me a lot of appreciation. It will be something that puts me on magazine covers. I just need to find my unique purpose, and then my life will be wonderful. लेकिन आप अर्जुन को देखो, कहाँ ग्लैमर, कहाँ रोमांस, कहाँ enjoyment? Fighting that war was not glamorous, not romantic, not enjoyable. It was not that at the end of each day he went home and everybody said, wow, wow, बहुत बढ़िया आपने किया आज, उसको मारा. They were in pain. He was not enjoying fighting. He did not want to fight. But his dharma was, number one, he had the dharma of a kshatriya, a warrior, but he also had the very specific dharma of restoring dharma to the people of Kurukshetra and the entire area. That was his dharma. So when we find our dharma and live our dharma, आप ऐसे मत सोचो it will always be fun, or it will always be glamorous and romantic. But it is our that unique purpose. मैं कभी ऐसे सोचती हूँ, you see सड़क के ऊपर, जब आप खासकर पहाड़ में जाते हैं, along the side of the road, you see these men and they are hammering rocks. Big rocks, they're hammering them into little rocks hammering them into even smaller rocks. तो मैं सोचती रहती हूँ कि क्या इस आदमी जन्म लिया with the dharma of just being a rock hammerer? संभव नहीं है. That's not a dharma. कुछ और होगा. And then I think, okay,
well, maybe this guy, maybe he's working double shifts, hammering rocks, so that his daughter, choti si beti unka, so that she doesn't have to beg on the side of the road. जैसे बाकी slum area के बच्चे भीख मांगते हैं on the side of the road. ये आदमी double shift काम कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी school जाए, so that his daughter can go to school. Now, his daughter is the first girl in the slum area to go to school. उसको देखे बाकी सारे लड़कियां अपने माता जी और पिताजी से पूछने लगता है कि हमें भी चलना है, हमको जाने दो. We also want to go to school. हमें भी पढ़ना है. Now, it's very likely कि ये आदमी जो है जल्दी मरने वाले हैं. Because those types of jobs, those types of lives, they're not healthy. And they tend to end quite quickly. लेकिन उनका जो धर्म, without even knowing it, अब अगर आप उनसे पूछेंगे, he will just say, बस मेरा बेटी भीख नहीं मांगेंगे. My बेटी will not be a beggar. वो पढ़ेगी. He doesn't have in his mind कि I am starting a revolution of women empowerment in the slum. वो नहीं सोच रहे कि I am a revolutionary, मेरे वजह से सारे लड़कियां स्कूल जाने लगेंगे. उनको इतनी मालूम है मेरी बेटी भीख नहीं मांगेगी. लेकिन what we can see later on, शायद उनकी मरने के बाद, now in the slum सारे लड़कियां स्कूल जाते हैं with their brothers. Now none of the children are beggars. But this man started a revolution. That was his dharma. So many times we don't even necessarily know what our dharma is. जो भी ह्यूमन बीइंग हैं, क्या आज के वक्त में अपना धर्म भूलते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या होना चाहिए? I think definitely लोग अपने धर्म भूलते जा रहे हैं क्योंकि people have gotten very captured by this whole idea of अपने को दिखाना. Life has become about दिखाना. पैसों से, power से, सुंदरता से, prestige से, social media की followers से. Life has become all about showing how much money I have, my clothes, my power, my role. And what we have forgotten is actually what is my dharma here. किसी का धर्म केवल दिखाने का नहीं है. Nobody has taken birth with this dharma of आप सबको दिखाएंगे. पैसा, power, prestige, no. जितना भी मिलते हैं हमको, चाहे पैसा हो, चाहे power हो, चाहे influence हो, we receive it for a reason. We receive it so that we can utilize it for something much better. If the universe has given us money, it means to share and to spend. शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है कि कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. 10 हाथ से कमाओ, लेकिन हजारों हाथ से बांटो. So if we've gotten money, केवल दिखाने के लिए नहीं है, बांटने के लिए है. If we have gotten influence and impact, it's not just दिखाने का देखो मेरे कितनी followers हैं. It's ताकि मैं वो influence, वो impact उपयोग करूं to help guide other people on the right path, to inspire them, to motivate them. So yes, I think you're right, कि people are forgetting their dharma. They're forgetting the simplicity, the humility of just fulfilling my duty. सभी एक दूसरों को देखने लगे. वो क्या कर रहे हैं? वो कहाँ वेकेशन ले रहे हैं? वो कौन सी साड़ी पहन रही है? वो क्या पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे? And we are forgetting मेरा धर्म क्या है?
And then we spend our lives just running after what other people are doing. And we lose ourselves. तो क्या करना है? We need to remember that our peace, our joy, our meaning, our fulfillment in life comes only from fulfilling our dharma. And if we don't, तो वापस आ जाएंगे. भगवान बहुत patient है. The universe is very patient. यदि इसी जन्म में हम ठीक से अपने धर्म fulfill ना करें, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर आ जाएंगे. एक चांस और मिलेगा. अगली जीवन we don't fulfill it, कोई बात नहीं, फिर आएंगे. We get to keep coming back. But that is not what we want. ऐसे नहीं कि मुझे बार बार वो same lesson सीखने के लिए आना है. We have to remember what is really my dharma. And if you don't know what yours is, don't worry. Begin with just the universal dharma. Be loving, be caring, be sharing, be truthful. Let your dharma be just to share love and peace. मुझे याद है मैंने अपनी लाइफ में, ये बहुत साल पहले मैं साउथ कोरिया में थी, सोल एयरपोर्ट में, साउथ कोरिया. एक बहुत बड़ा इंटरफेथ हार्मनी का इवेंट हुआ वहाँ. और फिर उसके बाद मैं वहाँ से न्यूयॉर्क फ्लाई करके जा रही थी to do a program at the United Nations. लेकिन यूएन में जाने से पहले मैं न्यू जर्सी में एक सत्संग कर रही थी डिवोटीज के साथ. तो सोल एयरपोर्ट में मैं अपनी को पूछ रही थी कि अरे तुम्हारे जीवन क्या है, कहाँ यहाँ कोई बहुत बड़ा इंटरफेथ मतलब स्टेडियम में इवेंट है, कहाँ फिर यूनाइटेड नेशंस में you're talking about women's empowerment and water and sanitation and climate change, कहाँ ध्यान सिखा रहे, सत्संग दे रहे. Who are you and what do you do? Like what is your job? And उसी समय मेरे को अनुभव आया. I can still picture in my mind कि मैं कौन सी गिफ्ट शॉप के बाहर खड़ी थी. I was walking to my gate. उसी समय अनुभव आए. Your job is just to spread love and peace. चाहे एक स्टेडियम में है in Seoul, South Korea, चाहे यूनाइटेड नेशंस में, चाहे कोई मंदिर में या हॉल में, चाहे ऋषिकेश में गंगा के किनारे, चाहे जहाँ भी जाओ. Your dharma, your duty, your job description is to spread love and peace. And suddenly everything became very simple and very easy. Suddenly कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, because my lakshya is very clear. Share love and peace. And so in the same way, ये केवल मेरा धर्म नहीं है. Everybody can have that dharma. Let us all be those bringers, those sharers, those transmitters of love and peace to those around us. और हम लोग अभी तक इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए हैं कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये कहता है. बेसिकली हमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है. हम क्या हैं, हम दूसरों को कितना प्यार दे रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं, कितनी इज्जत दे रहे हैं, कितना पीस, कितना लव हम लोगों में शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं. जैसे भी साध्वी जी ने बोला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और वाकई में सीरियसली मैं आपको बताऊं, इस प्रोग्राम को करने के बाद मुझे खुद आज समझ में आया है कि मेरा धर्म क्या है. क्योंकि इंटरनली ना आपकी जो अंदर आत्मा है, जो अंदर है, वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है. और उस वक्त अगर आपने उसको कैच कर लिया, आपने उसको समझ लिया, तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ पा सकते हैं. और सीरियसली इस प्रोग्राम को करते वक्त बहुत सारे चेंजेस खुद मेरे साथ हुए हैं, हो रहे हैं. और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सकारात्मक बदलाव आप भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे. आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही. साध्वी जी,
दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्रीशियस, इतनी प्यारी प्यारी और इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गंगे। जय गंगे, जय गंगे, जय श्री कृष्ण।